अपने पैरों से सारे खड़े हो जाओ वचन की इज्जत वास्ते। ये सारा समा भाई रोशन उनके हाथ में है, जिमें वो चलाते हैं वो चले। Please don't let me keep you standing too long. मैं तो बहुत ज़्यादा देर खड़ा नहीं रखना। Hallelujah. Praise God. Let us bow our heads. आओ अपने सलाम चुकाइए। Gracious Heavenly Father, दयालु स्वर्गीय पिता, we give you all the glory and all the honor. कई सारा इज्जत मान तेरे नाम ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। You are our strength. तू ही साडा बल है। Lord, you are our all in all. तू ही साडा सब कुछ है प्रभु। And Father, we acknowledge your great love to us. आई ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ। That you sent your Son to save us. ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। Amen. ਆਮੇਨ। And Father, that you sent your prophet. ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਪਿਤਾ ਭੇਜਿਆ। That we would be ready for your coming. ताकि ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਮਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। We give you the glory and honor for that. ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। We thank you for every servant of God in India. ਆਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Lord, we know the burden is hard, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਝ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ, but you are their strength. ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਹੈ। Dear merciful Father, प्यारे कृपा करने वाले पिता, may you by your divine grace अपनी तू लौकिक कृपा दे नाल रब्बी कृपा नाल strengthen our precious brethren this evening. ए शाम साडे अनमोल बेशकीमती भाइयां नू तगड़े कर। Father, your arm is not too short. Your arm is not too short. प्रभु तेरी बाह छोटी नहीं है। You can reach down from heaven. तू स्वर्ग तो अपनी बाह बढ़ा सकता है। Lord, as our hearts reach up with our needs, ओ यार साडे हृदयां च साडियां लोड़ां हां, with our questions, बिना सवाल दे प्रभु, with our longings, बिना उड़ीक दे and meet everyone. हरेक दी लोड़ नू पूरा कर। Lord, anoint my lips to speak your word, प्रभु तेरा वचन बोलने लई मेरे बुल्लां नू मसा कर and anoint our hearts and ears और साडे कन्नां नू और दिलां नू मसा कर to receive your word. तेरा वचन कबूल करने लई प्राप्त करने लई। Amen. आमीन। Let us quickly turn to Leviticus और लेविया की किताब वाल चलते हैं। chapter 9. लेविया 9 अध्याय च पढ़ते हैं। Amen. आमीन। लेविया 9। Then I'll let you be seated and make yourself comfortable. और मैं पढ़ के तुम फिर बैठ ले दूंगा ताकि तुम आराम दे नाल बैठ जाओ। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Verse 13. लेविया 6:13। The fire shall ever be burning upon the altar. 6:13. 6:13 है। It shall never go out. Amen. लेविया 6:13। You may be seated. यगवेदी दे उत्ते आग सदा बालदी रहे, वो कदे ना बुझे। कृपा तो करके दी बैठ सकते हैं। Amen. आमीन। We thank God for His glorious word.
ਆਏ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਚਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ And we thank God for being here again. ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ This morning, ਇਸ ਸੁਬਾਹ we spoke a little bit about Enoch's pyramid. ਆਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਨੋਕ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ There is very much ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ that we can speak about that. ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ The prophet sent, there's over 78 pages of quotations. ਔਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 78 ਹਵਾਲੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ where the prophet spoke about the Great Pyramid. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਿਰਾਮਿਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ Amen. ਆਮੇਨ And by His grace, ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ we can connect the dots. ਔਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Let me just read one of my precious ministry brethren. ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ The headstone is yet to come. ਚੋਟੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ The 7 steps in the pyramid, we'll go through that someday. ਔਰ 7 ਜੋ ਸਟੈਪ ਹਨ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ I'd like to show you how it is really perfectly with the scripture. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ And now, if you notice on your American dollar, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ the great headstone, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਚੋਟੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ the eye, the great seal. ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਨ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਹੈ It will come. ਇਹ ਆਵੇਗੀ And notice those stones. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ So the prophet himself actually wanted to take just a message to go through. ਔਰ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ But he left us enough ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ to connect the dots. ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕੀਏ ਜੋੜ ਸਕੀਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ Amen. ਆਮੇਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕੀਏ I've read a funny scripture ਔਰ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ in Leviticus ਲੇਵੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ about not letting the fire go out. ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਕਦੀ ਨਾ ਬੁਝੇ What is that got to do with the pyramid? ਔਰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪਿਰਾਮਿਡਾਂ ਨਾਲ The word pyramid ਪਿਰਾਮਿਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋ ਹੈ means ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ fire. ਅੱਗ Fire means fire ਅੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਹੈ in the middle. ਵਿਚਕਾਰ ਸੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਿਚਕਾਰ In the middle. ਵਿਚਕਾਰ Amen. ਆਮੇਨ I also told you, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ well, God wrote 3 Bibles. ਬਾਈਬਲਾਂ 3 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ He wrote the stars in the heaven. ਔਰ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖੀ In Noah's day, they could understand that. ਔਰ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਨ God has given us enough in this word. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ But what Enoch did, ਹਨੋਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ he was a prophet. ਉਹ ਨਬੀ ਸੀ And he could understand that heavenly voice. ਔਰ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ And all the passages in the pyramid ਔਰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਹ ਹਨ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ aligned to the 7 sisters, ਔਰ ਉਹ 7 ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ or aligned to Drago the dragon. ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਤੇ ਅਜਗਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ Amen. Or they aligned to the North Star Christ or to Orion. ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਤਾਰਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ Being a prophet, ਨਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ he took an heavenly voice ਉਹਨੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ and produced an earthly witness. ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ Amen. ਆਮੇਨ And so it takes a prophet ਇੱਕ ਨਬੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਲਈ to catch the heavenly voice, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਦਾ to produce
produce an earthly witness. ताकि धरती दे गवाह ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। I told you that that pyramid was for a sign and for a wonder. और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ। But it was for more than that. ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। You know, the entire continents moved, of course, in Noah's flood. और ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਿੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਧੁਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ। The continents drifted apart. और ये फट गई सी धरती। There was trouble on the earth like the earth had never known. धरती दे उत्ते एक ऐसा दा कष्ट आया जिंदा दा पहला कदे नहीं आया सी। At the pyramid they find whale bones. Whale bones. और पिरामिडां दे हेठा आले दुआले उन्होंने वेल मच्छियां दियां हड्डियां देखियां। And sea creatures. और जेड़े समुद्र दे होर जीव जंतु होंदे हन उन्हां दी हड्डियां भी देखियां। To testimony. A testimony. एक गवाही हन To the terrific, the colossal shaking. कि इहनूं हिलाया गया सीगा। But the pyramid पर पिरामिड never moved कदे भी नहीं हिले 1 inch. एक इंच भी। Now the pyramid हुण मीनार represents you तुहाडा नमूना हन and represents me. और ये मेरा नमूना है। Amen. आमीन। Now the prophet prophesied a great squeeze. हुण नबी ने एक बड़े सताव होने की गल कीती है। And before we can have a squeeze, और इस तो पहला कि वो तनाव या सताव दुल्हन दे उत्ते आवे, Pi Roshan अब भाई रोशन has to translate जिन्हें इन्हें अनुवाद करना है this message. इस संदेश नु, Because there's nothing else क्योंकि कुछ भी और नहीं है will prepare you to stand that time. उस समय च खड़े होने ਲਈ कोई और चीज नहीं है बल्कि संदेश ही है जेड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ उस वेले तक तैयार कर सकता है। So the squeeze can't come और एक सताव आवेगा till the bride has had a chance to dress herself in the word. कि लाड़ी दे उत्ते ताकि लाड़ी नु वो तैयार करे। You know, before Brother Branham could preach the third pull, इस तो पहला कि भाई ब्रानम ने तीसरे खिताब की सेवा शुरू की थी, the divine mystery truths of this message, the seven seals. और अभी जेड़े भेद छुपे हुए हर परमेश्वर दे सत्ता मोहरां दे, He spent 33 years 23 साल लगे इनू setting the church in order. चर्च नु एक ऑर्डर विच करन लई। The message he preached before the seals संदेश जेड़ा उन्हें मोहरां तो पहले कीता was church order. वो चर्च ऑर्डर सी, Because the third pull क्योंकि तीसरा खिताब touches your soul. वो ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਦਾ ਹੈ। And when we're dealing with the soul and we're dealing with the word, और ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, we've come away from denomination. ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। The second pull दूसरा खिताब and the first pull और पहला खिताब dealt with the body, healing, वो शरीर के नाल संबंधित रखते हैं, चंगाई के नाल dealt with the spirit. और क्या आत्मा के नाल। But the third pull dealt with the soul. पर तीसरा खिताब सीधा ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। And it's a third round, so it's a holy of holies. और तीसरा खेतर पवित्र अति पवित्र है। And there has to be a reverence और उथे पे पवित्रता की मांग की जाती है to hear God's word. परमेश्वर का वचन सुनने दे लई। Brother, in denomination, भाइयों जथेबंदियां दे विच they can behave any way. They behave any way. और Behave any way. Behave. वो किसी भी तरह का व्यवहार कर सकते हैं। Amen. आमीन। Because क्योंकि it's this the emotional realm of the body and the flesh. क्योंकि उसे शरीर जो है साडा ओदे जज्बातां दे विच ही वो घूमदे आ। But God commanded Moses, पर परमेश्वर ने मूसा को हुक्म दिता, build me a house. मेरे लिए एक घर बना। And before Moses could build that house, इस तो पहला
कि मूसा घर बनाਉਂਦਾ God took Moses to heaven. परमेश्वर ने मूसा ਨੂੰ स्वर्ग ਤੇ ਉਠਾ I said, ਲਿਆ Moses, this is where I live. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मूसा ਇਹ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ If you can reproduce where I live, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਥਲੇ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਸਕੇ then I can come and dwell with you. ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ And God didn't dwell in the outer courts. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ And God didn't dwell in the candlesticks. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ But the pillar of fire was in the holies of holies. ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀ So God took the prophet ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਂਦਾ to heaven ਔਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ and said, have a look around. ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ See what it's like in heaven. ਔਰ ਵੇਖ ਸਵਰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ And if you can build my house ਔਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ down here ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ like you saw in heaven, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ the pillar of fire, ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ God himself ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਖੁਦ will dwell there. ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ This word came to prepare us ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ to live in the throne room of God. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ It ਲਈ brought us out of dark denomination. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਹੈ Brother, the message isn't ways of the West. ਓ ਭਾਈਓ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੱਛਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ The message is a man went to heaven exactly what God liked. ਪਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ Spent 33 years laboring at his pulpit. 33 years 33 ਸਾਲ ਉਹ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ to set the church in order. ਚਰਚ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ Then the angel came down ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਇੱਕ ਉਤਰ ਆਇਆ and revealed the seals. ਔਰ ਫਿਰ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਖੋਲਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ Brother, do not take anything light about this message. ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਨਾ ਲਓ ਭਾਈਓ The prophet showed us the way, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ and I'll stay with it to my dying breath. ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਦੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ I'm ਹੈ not looking for a sensation. ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ I'm not even looking for a healing. ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ Because if the pillar of fire comes down ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਇੱਕ ਉਤਰਦਾ ਹੈ in the presence of the holies of holies, ਔਰ ਆਤ ਪਵਿੱਤਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ everything that was dead ਔਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ came alive. ਜੋ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ Brother, we won't pray for the sick. ਔਰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ The presence of Jesus Christ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਉਸਦੀ will heal the sick. ਉਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ This message ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ took us out ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ of trying to just operate gifts ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਦਾਨ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ to allow the giver of the gifts ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ to manifest himself, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ that no man would get the glory. ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਮਿਲੇ Amen. ਆਮੇਨ Fire ਅੱਗ in the middle, ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਗ and you must never let it go out. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ We read that the pyramid was an altar in Egypt. ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਪਿਰਾਮਿਡ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਗਵੇਦੀ ਸੀ And the fire ਔਰ ਅੱਗ that was lit by Almighty God in your heart, ਔਰ ਉਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ only God himself can save you. ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ Amen. ਆਮੇਨ And when the fire from the coal, the altar of heaven touches you, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਤਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ sets you ablaze because Jesus has saved you. ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦੀ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ It's not the song leader's job. ਔਰ ਇਹ ਸੌਂਗ ਲੀਡਰ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ It's not the pastor's job. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ But you
responsibility to keep the fire burning. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। Amen. ਆਮੀਨ। Brother, ਭਾਈਓ, sister, ਭੈਣੋ, the denominations told us lies about what fire was. ਔਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਅੱਗ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। The fire on me. ਔਰ ਇਹ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। No. ਨਹੀਂ, Jeremiah said, ਯਿਰਮੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, thy word, O Lord, is like fire in my bones. ਯਿਰਮੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। The word of God ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ sets you on fire. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, And it becomes like fire in your bones. ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। And it's fire in the middle. ਔਰ ਇਹ पे ਵਿਚਕਾਰ ਆਗਿਆ ਜੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, There was a great mystery. ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੇਦ ਹੈ। People looked into the pyramid ਔਰ ਲੋਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵੇਖਦੇ ਹਨ and they couldn't understand it ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ because ਹਨ, it was wrote in the language of a prophet. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਬੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, Symbols. ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Amen. Do you know that there are 7 seals in the pyramid? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। Do you know that there's 3 pools in the pyramid? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਖਿੱਚਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। Do you know every ministry of significance is recorded in the pyramid? ਔਰ ਹਰੇਕ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। The central theme of the pyramid, ਔਰ ਪਿਰਾਮਿਡਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਹੈ right in the middle, ਉਹ ਜੋ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ speaks about the cross of Calvary. ਉਹ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। I'd have to show you all the passages and explain it. ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। After Calvary, ਕਲਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ they go a steep passage, ਔਰ 3 ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ and it's called the Great Hall of Light. ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਨ ਚਾਨਣ ਰੋਸ਼ਨੀ। And it's 7 overlapping steps. ਔਰ ਇਹ 7 ਉੱਤੇ ਸਟੈਪ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਆਏ ਹਨ, 7 ਪੌੜੀਆਂ। Speaking of 7 church ages. ਇਹ 7 ਚਰਚ ਯੁੱਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। Speaking of the candlesticks. ਇਹ 7 ਸ਼ਮਾਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। It's a very tall passage. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਹ ਹੈ। There's a lot of freedom there. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਣੀ ਵੱਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। But before that is the passage of the hall of light in darkness. ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਟੋਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ। It represents the law of the Jews. ਔਰ The law of the Jews. ਔਰ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। It's very low. ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। You have to stoop to climb up it. ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, Because until grace comes, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ there's ਹੁੰਦੀ no liberty. ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Then you come to the 7th step. ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 7 ਸਟੈਪ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ। Amen. ਆਮੇਨ। And Brother Branham said ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ that the messenger to the king stood ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ to announce the coming of the king. ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ। And he said there John stood ਔਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਯੋਹੰਨਾ ਖੜਾ ਸੀ before Christ came. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਆਇਆ। Now the pyramid, there's an inch in the pyramid. ਹੁਣ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵਿੱਚ ਇੰਚ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਮਿਣਤੀ ਇੰਚਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। And it's prophetic. ਔਰ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। So you can measure back and find Calvary. ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਣਤੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ। You can measure back and find Adam. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮਿਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਮ ਲੱਭੇਗਾ ਉੱਥੇ। You can measure back and find Paul's ministry. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਣੋ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਲੱਭੇਗੀ। Now man looks at that
और आदमी या मनुख ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ and they can understand it. और ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ But when they come to that seventh step, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ 7 ਸਟੈਪਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ they scratch their heads. और अपने सिरां ਨੂੰ ਖੁੰਝਦੇ ਹਨ Because them dates now don't mean anything to anyone else other than the bride of Christ. क्योंकि ਉਹ ਸਭਨਾ ਲਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ On the seventh step और 7 ਮੋਢੇ is 1909. और ਇਹ 1909 ਹਨ And that's the year और ਇਹ ਉਹ ਸਾਲ ਹੈ William Branham was born. ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ Amen. ਆਮੇਨ There is no worldwide event. Google 1909. और कोई भी 1909 ਚ कोई ऐसा दी घटना नहीं है And you will find nothing significant took place in the world. दुनिया च कोई भी तुम महत्वपूर्ण घटना नहीं ਲੱਭ ਸਕਦੇ 1909 ਦੀ But God sent a prophet. पर परमेश्वर ने नबी भेजा 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ And a pillar of fire was there at his birth. और अगला बात ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ Amen. It Amen. means something to the bride. ਇਹ ਕੋਈ ਲਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ Because the pyramid represents her. क्योंकि वो पिरामिड सानू ही पेश करते हैं And Enoch built it. और हनोक ने इसको बनाया And it must be important. और ये जरूर महत्वपूर्ण है Because Enoch walked with God 365 years. क्योंकि 365 साल हनोक चलता रहा And he was raptured. और ओदा उठाई जाना हो गया सी And Enoch wrote his rapturing faith message in that pyramid. और हनोक ने अपना स्वर्ग से उठाए जाने वाला विश्वास ना पिरामिड च लिखिया As you get from the middle to the top, और जब भी गब्बे तो ऊपर जाते हो everything starts speaking about the second coming of Christ. और ये हर एक चीज होते यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में गल करती है Hallelujah. हालेलुया Amen. आमीन Before you enter the king's chamber, और इसको पहले कि राजे की कोठरी च दाखिल होवो there's a small chamber. और वो एक छोटा जही और कोठरी है The king's chamber और वो राजे की कोठरी कहते हैं is the exact same dimensions of the temple of the Holy of Holies. और ओदी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल उन्नी है जिन्नी बाइबल विच हैकल दी लंबाई चौड़ाई सी Amen. आमीन The actual material changes. और असली जो उते मटेरियल बरतया गया बदल दिता गया है Through the pyramid, पिरामिड दे विच दी amen, आमीन it's built from limestone. और इनु चूने दे पत्थरां नाल बनाया गया है But once you start entering the king's chamber और जदों and the तुसीं prophet's chamber, जब तुम नबी दी कोठरी च दाखिल हुंदे हो it changes ये बदल जाता है to granite. और ये संगमरमर दा है Why? क्यों The holies of holies changed क्योंकि हुण अति पवित्र जगह बदल गई to gold. वो सोने च आ गए Amen. आमीन The presence of deity. और आत्महान दी हजूरी है उत्थे Royal audience with the king. Royal audience with the king. Royal audience with the king. क्यों ये श्रोते राजे दे नाल हन Amen. आमीन Hallelujah. हालेलुया Before you can enter that king's chamber, इस तो पहले कि राजे दी कोठरी विच दाखिल होवो there is only one passage, सिर्फ उते एक ही रास्ता है and it's called the prophet's chamber. और इसनु नबी दी कोठरी कहंदे हन And you enter a third pull locking door mechanism. और तुई उते तीसरे खिंचाव दे उस सेवका च जांदे हो There's 3 pulls, ये उते 3 खिंचा हन and there's 3 doors, और 3 दरवाजे हन and you've got to pass them और तुई उन्हां दे अंदर जांदे हो before you get into the king's chamber. इस तो पहले कि तुई राजे दी कोठरी विच जाओ And then there's a passage called the passage of the veil, very narrow. और एक उते बहुत ही तंग रास्ता है एक और And you have to almost kneel to go down it. और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ Because the prophet teaches the bride क्योंकि परमेश्वर ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ to enter reverently into the holies of ਕਿ holies. परमेश्वर ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ
Esther had to be reverent before the king. ਐਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਦਰਯੋਗ ਰਹਿਣਾ ਸੀ Dressed a certain way. ਔਰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਸਨ Nothing else would be accepted. ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ Then before the king, ਔਰ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ Esther, what is your petition? ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਤਰ ਤੇਰੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ Up to half my kingdom. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਵੀ ਮੰਗੇ Amen. And I will give it. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ All Esther had to do ਔਰ ਅਸਤਰ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ was speak in that presence. ਉਸ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਸ ਬੋਲਣਾ ਸੀ And the king would give it her. ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ In the chamber of the king, ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ there is only one object. ਔਰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ Amen. ਆਮੇਨ Glory to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ And it's the same dimensions ਔਰ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੜਾਈ ਉਨੀ ਹੈ as the Ark of the Covenant. ਜਿੰਨੀ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੀ ਸੀ The Word of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ The throne of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੀ Under the Shekinah glory. ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਨਾ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਹੇਠ The ਜਿੰਨੀ ਸੀ Shekinah glory ਮੈਂ ਅਲੌਕਿਕ ਮਹਿਮਾ only anoints the Word. ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਦੀ ਸੀ This message came ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ to line us up with the Word, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਆਇਆ that ਹੈ the Shekinah glory could not anoint us. ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਲੌਕਿਕ ਮਹਿਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ ਸਕੇ It won't anoint anything else. ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ It won't accept anything else. ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ Amen. ਆਮੇਨ This fire that is in the middle of us, ਔਰ ਜੋ ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਗੱਬੇ ਹੈ and by hearing that, and we come to church, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ and people want to teach about the Bible, ਔਰ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ the preeminence is on the Word. ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ Amen. ਆਮੇਨ And as you're hearing that word, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ the revelation of the Word is striking you. ਔਰ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ And it's fire in your bones. ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਫੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਬਲਦਾ ਹੈ You may not exactly know it's there. ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈ You may wonder, what am I doing? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ In the center of the earth, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ there is volcanic fire. ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ And every now and again, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ the volcano explodes ਔਰ ਇਹ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣੇ ਹਨ and lets the world know ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਲਵੇ what is in the middle of it. ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ Brother, it takes great pressure on this earth ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ to cause the volcano to explode. ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਹਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਫਟ ਜਾਣ And God promised, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ many are the afflictions of the righteous, ਧਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ but God would deliver you from them all. ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ Amen. ਆਮੇਨ So when them things which God's promised, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ the afflictions ਉਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਦਾ and the pressure comes ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ out of your mouth, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ you say, by His stripes I am healed. ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ And the fire, the revelation of God's word that is already in you, ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਉਹ ਅੱਗ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ explodes out. ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ Amen. ਆਮੇਨ Fire ਅੱਗ purifies itself. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ The volcanic explosions ਔਰ ਉਹ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਫਟਣਾ purify the air, ਔਰ ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ burn all the disease. ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਵੇਗਾ Amen. ਆਮੇਨ And when you're speaking
speaking divine revelation of the Word of God, या तुम रब्बी प्रकाशन बोलोगे अपने मुंह दे विचों, the air and the atmosphere around you is purified. ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਸਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। When you say glory, hallelujah, praise God, Jesus came, जो तुम कहते हो ग्लोरी हालेलुया धन्यवाद यीशु मसीह, the miserable atmosphere cannot stay. और उसे बुरा वातावरण खड़ा नहीं रह सकता है। The revelation of the Word inside you purifies. यीशु ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ जो वचन का प्रकाशन है वो ਤੁਹਾਨੂੰ शुद्ध करता है। Hallelujah. हालेलुया, Oh, glory. ओ महिमा होवे। God knew परमेश्वर जानता है exactly what you would need ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ to make it through the trials. ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। You would need more than to see healing, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। which is good. You would need more than salvation, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। but you would need the complete revelation of God's Word. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। And that divinely revealed mystery truths और जो रब्बी तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਮਹਾਨ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਹਨ, would set your heart on fire, और जो ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, and you would return back to the faith of your forefathers. और ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। It had to be fire in the middle. और ताकि इस विचकार एक आग लग सके। Hallelujah. हालेलुया, Oh, glory. महिमा होवे। Brother Branham भाई ब्रानम में was one man. एक आदमी सी। Hallelujah. हालेलुया, And he had a tremendous job. और उन्हें बहुत बड़ा काम किया, He had to withstand the Jezebel religion. और इजबल धर्म के विरुद्ध खड़ा होया हो। Amen. आमीन। Brother, this one man, और भाइयों एक आदमी like Moses, मूसा देवान, one man एक आदमी against tremendous opposition. बहुत बड़े विरोध के सामने एक बंदा खड़ा होया। You may think, तुम हो सकता सोचो oh, God would have sent in millions of angels. मूसा दा परमेश्वर लखा दूतां नु भेजे। Amen. आमीन। And with millions of angels, और ये लखा दूत जेड़े हां, he would be able to overcome. और ये आउणगे ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ। But the angels पर वो दूत only encamp about Mount Zion. और वो सियोन दे पहाड़ दे दुआरे राखी करते हैं। God wanted to give him something more strong than that. परमेश्वर तालू उस तो भी वध के कोई शक्तिशाली चीज देनी चाहता है। God gave him an infallible revelation of his word. परमेश्वर अपने ना फेल होने वाले वचन का प्रकाशन तानु दिंदा है। And the revelation of his word और उसने वचन का प्रकाशन was like fire in his bones. और वो हड्डियां में आग वांग है। It was a one-man invasion down to Egypt. और वो एक आदमी सी जेड़ा उस आग नु वचन लेके मिस्र वाल जा रहा सी, To call a bride out. ताकि लाड़ी नु तू बाहर कढ के लियावे। My brother, my sister, मेरे भरावो और मेरी बहनों, there's nothing greater कोई भी चीज महान नहीं है that God can give you जो तानु परमेश्वर दे सके than a revelation of his word. अपने बच्चे दे प्रकाशन तो वध के। No man can even come to Jesus. कोई भी बंदा यीशु मसीह को नहीं आ सकता। A preacher cannot bring you to Jesus. प्रचारक तानु यीशु मसीह को नहीं ले आ सकता। A song leader cannot bring you to Jesus. गीत गवाउन वाला तानु यीशु मसीह को नहीं ले आ सकता। God himself has to speak to your soul to bring you to Jesus. पर परमेश्वर आप खुद ताने प्राण ने नाल गल करता है ताकि यीशु मसीह को तन ले आवे। Amen. आमीन। No man cometh unto me unless the Father draws him. कोई बंदा मेरे को नहीं आ सकता, यीशु ने कहा जब तक मेरा पिता उन्हें पहला खींचना लवे। On this rock और इस चट्टान देते I build my church, Peter, पतरस मैं अपनी कलीसिया बनावांगा, and the gates of hell नरक दे दरवाजियां दा cannot prevail against them. इस ते कोई बस नहीं चलेगा। So the bride इसलिए लाड़ी has
has to learn to get in the spirit और जब प्रभु आत्मा चाहता है of the composer, और जो संगीता दिया धुनां बनाने वाला है to hear his voice. और उसकी आवाज को सुनना है You cannot come to church तुम कलीसिया च नहीं आ सकते scratching your head, और अपने सिर को खास करो yawning. और सोचो कि है You've got to come to church तुहानू चर्चे जाना पैना है prayed up प्रार्थना करते हुए like Daniel in the lion's den. जिवें दानियल ने शेरां दे घुरने च कीती सी For when the word of God is going forth, और जदों परमेश्वर दा वचन बाहर निकलिया you catch the voice of the heavenly bridegroom. और तुम आवाज नू पढ़दे हो उस आवाज नू जो स्वर्गी लाने दी आवाज है You're not hearing a big name preacher. और तुम किसी बड़े प्रचारक की आवाज नहीं सुन रहे You're not even hearing an educated preacher. किसी पढ़े लिखे प्रचारक की आवाज नहीं सुन रहे You've come in the spirit. तुम आत्मा चाहते हो You're now beyond the flesh. और तुम उन शरीर तो दूर चले जाते हो And you're hearing from God himself. तुम आप खुद परमेश्वर के कोल तुम सुनते हो And God himself is putting his word in you. और परमेश्वर आप खुद अपने वचन ਤੁਹਾਡੇ अंदर रखता है Brother Branham said, भाई ब्रानम ने कहा David तो knew how to get quiet before the Lord. परमेश्वर दे के शांत किवें होना दाऊद जानदा सी He leadeth me by still waters वो मैनू सुखदाई पानियां दे कोल ले जांदा है and by green pastures. और जूहां दे विच भी Amen. आमीन Brother Branham said, भाई ब्रानम ने कहा David played his instrument. दाऊद अपना साज बजांदा सी Amen. आमीन David was speaking to God. दाऊद परमेश्वर दे नाल गल कर रहा सी And God was speaking to David. और परमेश्वर दाऊद दे नाल गल कर रहा हुंदा सी The bear looked at David और बघियाड़ या भालू दाऊद वाल वेखदा सी and he said, he's such a little boy. कहंदा छोटा जिहा मुंडा आ The lion looked at David. और शेर देखदा दाऊद वाल He said, he's got curly hair. और एक कुंडल वाले वाला छोटा जिहा मुंडा है And he's busy playing his instrument. और वो तो व्यस्त है अपना साज बजाउण विच What the bear? पर जो भालू है And what the lion? या रिछ है या शेर है And what Goliath, the denomination? भावें गोलियत होवे संस्थावां दा Didn't know. नहीं जानदा सी David was speaking to God. दाऊद परमेश्वर दे नाल गल कर रहा सी And God was speaking to David. और परमेश्वर दाऊद दे नाल गल कर रहा सी And Brother Branham said, भाई ब्रानम ने कहा when David heard the voice of God, जब दाऊद ने परमेश्वर की आवाज सुनी he became fearless. वो निडर बन गया When you hear the voice of God या तुम परमेश्वर की आवाज सुनते हो and you go beyond the flesh, और तुम ये शरीर तो परे हो जाते हो that by my stripes you are healed. और तुम कहते हो दे कोड़े खान नाल मैं चंगा हो गया Cancer loses its fear. और ऐसा चीज ਤੁਹਾਡੇ डर ਨੂੰ दूर भजा ਦਿੰਦੀ है Blindness loses its fear. और जो अंधापन है ये खत्म हो जाता है And you shout glory, hallelujah. और तुम हालेलुया महिमा हो दे नारे मारते हो Read all about it. Read all about it. तुम ये बारे पढ़ते हो Jesus Christ has healed me. यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर देता है Before the healing takes place. इस तो पहला की चंगाई होवे Because it's a revelation. क्योंकि ये प्रकाशन है पहला And it's a fire shut up in your bones. और ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ पहले आग होनी चाहिए है And like the pyramid, और जो पिरामिड है many may be the afflictions, और हो सकता है जिन्ने मर्जी मुसीबतां होण but you are designed earthquake proof. पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭੁਚਾਲਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਸਕੋ You're designed to take great pressure. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਲਓਗੇ It might be foolishness to the eyes of the world. ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ Amen. ਆਮੀਨ There are churches that are dancing ਪਰ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ and singing और गा रही है and don't have the word. और दुनिया के वांग नहीं When Pakistan
पाकिस्तान with Russia's backing, और रूस और मदद कर रहा है invades India, और भारत ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ they'll collapse. ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ But the bride at that time, ਔਰ ਲਾੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ she will not be moved. ਔਰ ਉਹ ਹਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ Squeeze, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਬਾਅ ਆਵੇਗਾ squeeze. ਦਬਾਅ ਆਵੇਗਾ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ It's not the US who just has a squeeze. ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ All the world gets a squeeze. ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਬਾਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ When the economics of the West collapse, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਸਾ ਧੇਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ the West consumes 90% of the world's industry. और 90% ये जो इंडस्ट्रीज है ये सब ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ So the industrial nations ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ cannot export their goods. ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ And that in itself ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ causes all the nations to go into financial collapse. ਔਰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸਮਾਨ Amen. ਆਮੇਨ Brother, we'll need it. ਭਾਈਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ Because it's going to take something to get the bride in line. ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਆਵੇ Amen. ਆਮੇਨ In Zimbabwe, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ 'ਚ they're fairly good in the message. ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਲੋਕ They've had it in their own language for a long time. ਔਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ Not too long ago, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ they had a squeeze. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਆਇਆ Amen. ਆਮੇਨ The economy completely collapsed. और आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई Their money is worth nothing. और कोई भी चीज का कोई कीमत नहीं रही They don't trade in Zimbabwe. जिम्बाब्वे ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ They stopped using the Zimbabwe dollar. और जिम्बाब्वे ਦਾ ਡਾਲਰ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਤੋਂ ਚਾਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ 1 minute it's 100,000 Zimbabwe dollar to the pound. 100 Zimbabwe dollar to the pound. और 100 ਜਿਹੜਾ जिम्बाब्वे ਦਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਚ And the next minute it's 1 million Zimbabwe to the pound. और ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ जिम्बाब्वे ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੇਠ ਆ ਗਈ The people of Zimbabwe were starving. और जिम्बाब्वे ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ My brothers, my sisters. ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ Amen. The president of Zimbabwe said, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ if you carry on complaining, और जे तू ऐसे ही शिकायत करते रहोगे if you think it's bad now, और जे तू कहो कि ये बुरा है you'll be eating your children. तो ये अपने बच्चों को फिर खान लग पाओगे That's the truth. ये सच है A squeeze. उसे बड़ा दबाव आया हुआ प्रेशर हेठिया लोग Amen. आमीन At that time, उस समय the churches was full. Church attendance फिर भी चर्च च लोग भरे हुए हैं चर्च was full. ये भरे हुए People was in church an hour and a half before the service. और संगति शुरू होने तो अद्धा पौना घंटा पहले लोग आ जाते हैं They had nothing else to do. There was no work. और वो चर्च पहले ही आ जाते हैं Amen. आमीन The singing was glorious. और गाना बजाना बहुत शानदार है The miracles were glorious. There was miracle after चमत्कार miracle अद्भुत after काम miracle. बहुत ज्यादा होंगे बहुत महान अचंभे काम हो रहे हैं People who used to say, लोग होते कहते हैं my mobile phone's broke. मेरा मोबाइल फोन टूट गया They didn't have no money to get another one. नवा लेने का पैसा नहीं है Amen. हमें They didn't have no money to get it repaired. और ना ही पैसे हम वो रिपेयर कराने ले They brought it to church. और चर्च च लियाते हैं They laid it on the altar, और जगवेदी दे लागे रख देंगे हैं not recording the meeting, और रिकॉर्डिंग करने दे लिए नहीं प्रचार but believing God would repair their mobile phone. प्रार्थना करते हैं नेचा करते कि परमेश्वर मोबाइल ठीक कर देगा They take their mobile phone और
बाद जो उस मोबाइल फोन चुक रहे हैं out to the church और कलीसिया तो बाहर जाते हैं and start making phone calls. और फोन करने शुरू कर देते हैं। Amen. आमेन। They would say, pray over this handkerchief. और वो प्रार्थना जो रुमाला होते हैं, My fridge is broken. और औरत कराते हैं कहते मेरी फ्रिज टूट गई है। They would lay that handkerchief on the fridge और फ्रिज के ऊपर जाकर रुमाल रख रहे हैं and the fridge would get repaired. और फ्रिज जेडी दोबारा चलने लग पैंदी है। The squeeze is nothing to be afraid of. इसलिए जेड़ा स्टाफ आने वाला है तो डरन की लोड़ नहीं है। All that you've been laboring for. All that you've been laboring for. और हर एक चीज जिसने तुम मेहनत कर रहे हो, God will help you at that time. उस समय परमेश्वर ताड़ी मदद करेगा। Why? क्यों? That word of this message क्योंकि ये संदेश का वचन is in your bones. ये ताड़ियां हड्डियां दे विच And when the pressure comes, आया और जब स्टाफ आए प्रचार करें बोलना वचन जो अंदर है इस वचन बोलना है। Malawi is a very poor country. मलावी बहुत ही गरीब देश है। It's so poor. इतना गरीब है Yeah, it has nothing to give the world. दुनिया में देने लिए उन्हें कुछ नहीं है। It exports nothing. कुछ भी वो दुनिया से नहीं भेजते अपने देशों It struggles to feed itself. और वो अपने आप से भी उन्हें को अनाज नहीं है खाने लिए It's an embarrassment और वो समझो के शर्मिंदगी निकाले to the nations. दूसरे देशों के लिए So they send them money to try and help them. और पैसा भेजते हैं उन्हें देशों पे देश नु मदद के लिए। I've been in Malawi, मैं मलावी कई बार गया in the bush, झाड़ियां जंगलात too far away from hotels for Western preachers to go. ये पश्चिम दे जेड़े प्रचारक हैं नाले बहुत औखा है उन्हें जंगलात च जाना But the message books have gone. पर संदेश या किताबां उत्थे भी पहुंच रही हैं। The Western ministers, it's too much for them. और संदेश जेड़े पश्चिमी प्रचारकां उन्हें के लिए बहुत औखा काम है। But thank God, it's for the printed word. पर परमेश्वर का धन्यवाद होवे ये प्रिंटिंग छपाई दे काम दे राही। Amen. आमीन। Now, if the crops don't come in, और जे मनो ना दिया फसलां नहीं हुंदियां my brother, मेरे भरावो my sister मेरियों भैनों has no food. फिर कोई भी होते ना को खाने कुछ नहीं है। Many times, बहुत बार before the crops come in, और फसल आने तो पहले ही I've been in Malawi. मैं मलावी से गया कई बार There is no food to give the people. लोकां दे लिए खाने कुछ नहीं हुंदा You think no one will come? और फिर किथों आवेगा भोजन। Church is packed an hour and a half before the service. चर्च पहले ही इतना भरे हुंदे हैं संगति शुरू होने तो पहले ही We have 2 meetings, दो मीटिंगां हुईयां साडियां and they say stay for another meeting. और दूसरी मीटिंग ले भी होते रुके रहे Eating nothing all day. सारा दिन कुछ नहीं खाता उतना ही बैठे रहे। In Malawi, मलावे विच they have the spoken word. उन्हां कोल बोलिया होया वचन है। Do you need some food? और जे तुहानू कुछ भोजन की लोड़ है No problems, my brother. भरावो कोई समस्या की गल नहीं They speak. वो बोलते हैं। This is the squeeze. ये दबाव है उन्होंने तो स्टार विच नहीं लग रहे हैं। Oh, thank God for the squeeze. ओ धन्यवाद होवे Amen. Brother, you may think like turning away from this message. हो सकता तू सोच रहे संदेश तो पीछे हट जाइए But if you're a child of God, पर जे भी परमेश्वर के बच्चे हो every time you try to turn away, जब भी तू ये संदेश तो पीछे हटने की कोशिश करोगे God will turn you back. परमेश्वर तुहानू वापस मोड़ेगा इससे संदेश वाल। Amen. आमीन। I'm struggling to find out where I put my glasses now. Here we go. Let us read Jeremiah. आओ यिर्मयाह की किताब पढ़िए। I guess time's getting by. यिर्मयाह की किताब पढ़ांगे। Let's go to chapter 20. आओ 20 बाप पढ़िए यिर्मयाह 20। Amen. आमीन। Jeremiah, God knows exactly how to keep his children. परमेश्वर चंगी तरह जानता अपने बच्चों को कितना संभालना है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Verse 7. 20:7
Jeremiah, the weeping prophet. ਜਰਮਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ God said, harden your head like flint. Harden your forehead like flint. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾ ਲੈ When they're staring back at you, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ give them my word anyway. ਔਰ ਤਦ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ Amen. ਆਮੇਨ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Jeremiah knew he heard from God. ਜਰਮਿਆ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ He had an incredible, difficult job. ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ It was pronouncing judgment on Israel. ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸਨੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ And God knew they was going to go down to Babylon. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਲ ਚ ਕੈਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ And they wouldn't even repent. ਔਰ ਉਹ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ So Jeremiah was feeling sorry for himself. ਔਰ ਜਰਮਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ Oh, verse 7. Oh Lord, thou hast deceived me, and I was deceived. Thou art stronger than I, and hast prevailed, and I am in derision daily. Everyone mocketh me. हे यहोवा तैं मैनू भरमाया तां मैं भरमाया गया हाँ तू मेरे नालों तकड़ा है तू मेरे उत्ते परबल पै गया है मैं सारा दिन हासा बन गया हाँ सारे ही मेरा ठट्ठा उड़ाउंदे हन I thought the message of Jesus was going to be more than this. और यीशु मसीह दा संदेश इस तो भी वध है जो हासा बनया होया है I thought when I got the revelation of Jesus Christ, जदों मैं यीशु मसीह दे वचन दा प्रकाशन हासिल कीता that life was going to become easy और भाइयों ये सौखा नहीं है and peaceful. शांतिदायक नहीं है Everyone's mocking me. हर कोई मेरा हासा उड़ा रहा सी Everyone's talking about me. हर कोई मेरे बारे गल्लां कर रहा सी I'm quitting, said Jeremiah. और मैं जरमयाह दे वांग छड्डने वाला सी He was arguing with God, और ये परमेश्वर दे लिए ठीक है but God knew. पर परमेश्वर जानता है He put a tie post in Jeremiah. उन्हें जरमयाह दे लिए एक चिन्ह ठहराया He'd already given the revelation of his word. और उसने अपने वचन दा प्रकाशन दिता Amen. आमीन For since I speak, I cry out. I cry violence and spoil because of the word of the Lord has made me a reproach unto me and a derision daily. याद कदी मैं गल करदा हां मैं चिनाउंदा हां जुल्म अते बर्बादी पुकारदा हां यहोवा दा वचन दा मेरे लिए सारे दिन दा मेणा ते ठट्ठा बन गया है Amen. आमीन Then I said, I will not make mention of him. I'm not even going to speak about वो God. कह रहे मैं हुन परमेश्वर बारे कोई गल No नहीं करांगा more preaching. आगे तो प्रचार नहीं करांगा Church never listens. और चर्च वाले ना सुनियो Amen. आमीन Hallelujah. हालेलुया Nor spake I anymore his name. But his word was in my heart as a burning fire, shut up in my bones, and I was weary with forbearing, and I could not stay. जे मैं आखा मैं ओदा जिक्र ना करांगा ना ओदा नाम लेके अगे नु गल करांगा तां मेरे दिल विच बलदी अग वांग हुंदा है जेड़ी मेरी हड्डियां विच लुकी हुई है मैं इनू रखदा रखदा थक गया हां मैं सह नहीं सकदा The revelation of God's word परमेश्वर दे वचन दा प्रकाशन will always keep you ओ हमेशा तुहानू संभालेगा through all your troubles. He will give you victory. और तुहाडीआं सारियां समस्यावां जो तुहानू जित देवेगा But you must never let that fire go out. पर तुसी उस आग नू कदे भी बुझण नहीं देना है You must meditate in the word of God night and day. पर तू इस वचन दे उत्ते दिन रात ध्यान करते रहना है Every time the church doors open, और जब भी चर्च दे दरवाजे खोलते हैं you must be there to hear the word of God, तो जरूर परमेश्वर का वचन सुनने लिए उत्ते पहुंचना है to keep that fire burning. ताकि वो आग बढ़ती रहे Hallelujah. हालेलुया Brother, we are not Laodicea. भाइयों ਅਸੀਂ लाउदीकिया नहीं है Lukewarm. Lukewarm.
जो कि सील कर महान God vomit from God's mouth. और मुंह परमेश्वर के मुंह जो थोक देने वाले हैं कट दिते जाने वाले हैं We receive the seventh seal message आई सात मोरा दे वचन कबूल कीता है to put the fire of God inside of us. जिसने साडे अंदर उस आग को बाल देता है That no matter how cold and formal this world would become, चाहे ये दुनिया जितनी मर्जी सुस्त ठंडी और सील कर बन जावे no matter how great the temptation, और कोई परवारी किन्ने बड़े बड़े परतावे आ जान the fire in our bones would carry us through. और ये आग जो साडियां हड्डियां विच है ये सानू ना परतावियां दे विच नहीं लेके जावेगी जित बख्शेगी In closing, let us read Song of Solomon. आओ आओ जबूरा च पढ़िए श्रेष्ठ गीत च पढ़िए बंद करन तो पहले Amen. आमीन Chapter 8, श्रेष्ठ गीत 8 verse 5. 8 7 5 तो 7 का This is Israel इस्राएल है coming out of the wilderness. जो उजाड़ चो बाहर आ रहा है Amen. आमीन Glory to God. परमेश्वर के नाम में हम मांगले Right. Verse 5. 8 दी 5 श्रेष्ठ गीत Who is this that cometh up out of the wilderness, leaning upon her beloved? I raised thee under the apple tree, and thy mother brought thee forth, and she brought thee forth that bare thee. ये कौन है जड़ी उजाड़ तो अतहा होंदी जड़ी अपने बालम ते सहारा लेंदी है सेब दे बरिशेट मैं तेनू जगाया ओते तेरी मां नू तेरे जन्म दी पीड़ लगी ओते तेरी जननी नू पीड़ लगी This is Israel ये इस्राएल है leaning सहारा ले रहे हैं on her beloved, अपने प्यारे दा बालम दा leaning on the pillar of fire, और आगले खंबे दा सहारा ले रहे हैं leaning on the ark of the covenant, और नेम दे संदूक दे उते आसरा टासरा लगा रहे हैं coming up out of Egypt. और मिस्र दे विचों बाहर निकल रहे हैं Thank God. परमेश्वर दा धन्यवाद Hallelujah. हालेलुया Oh, glory. ओ दे नाम में You मांगले come out of Egypt. और मिस्र दी गल कर रहे हैं You know what it is to depend on your beloved. और तुम जानते हो कि अपने प्यारे दा सहारा लेना किवें है Hallelujah. Hallelujah. The Lord of God will always protect you. और यहोवा परमेश्वर हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा Amen. आमीन Set me a seal upon my heart and a seal upon thy arm. Love is stronger, as strong as death. Jealousy is cruel as the grave. And the coals thereof are the coals of fire, which hath most fervent flame. मैनू अपने दिल उते मोहर वांगू रख अपनी बाह उते मोहर वांगू क्यों जो प्रेम मौत वर्गा बलवान है ईर्खा पताल वांगू कठोर है ओदियां लाटां अग दियां लाटां सगों अध तेज लंबा हन Amen. आमीन It puts a fire of love for Jesus Christ. यीशु मसीह ਨੂੰ प्यार ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ When all the world wants to fall away, और जब सारी दुनिया डिगण वाली है you choose to stand ਤੁਸੀਂ खड़े होने ਨੂੰ चुनते हो because you're the bride of Christ. क्योंकि तुम यीशु मसीह की लाड़ी हो And nothing can quench that love. और उस प्यार को कोई बुझा नहीं सकता है And nothing can separate you from that love. और उस प्यार को कोई तुहानू जुदा नहीं कर सकता है Many waters cannot quench love, और बहुत पानी प्यार को बुझा नहीं सकते neither can the floods ना हर ओनू दब सकते हैं drown it. ना ही दर ओनू ना ही हर ओनू डुबा सकते हैं If a man would give all his substance of his house for love, जे कोई अपने घर दा सारा धन प्रेम दे बदले दिंदा it would be utterly contaminated. तां ओ ओनू अत तुच्छ जान दे Amen. आमीन Hallelujah. It's your free love. ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ It's your love affair.
और ये ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ He called you, और उसने ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ and it was your choice to come out. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਚੋਣ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ You come out to serve the Lord ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ because you love Him. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ He will never fail you. ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ He will never let you down. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇਵੇਗਾ But it's your responsibility ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ to never, ever let that fire go out. ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ Amen. Let us bow our heads. ਆਓ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ If there's anybody in here ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ that has a need of sickness in the body, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ please raise your hand to your beloved. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਲਓ The one that brought you this far ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ will not leave you. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ My friend, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ neither will you fail him ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਹੈ because he put his word in you ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ to make sure that you couldn't fail. ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਨਾ ਹੋਵੋ He gives you the revelation of beautiful Jesus Christ. ਉਹਨੇ ਸੁੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ This message is the revelation of Jesus ਇਹ Christ. ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ The book of Revelations is the revelation of Jesus Christ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ He is revealing his secrets. ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ He's revealing his faults. ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ He's sending you his love letters ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ that you will always have the strength to come through. ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ Many are the afflictions of the righteous, ਧਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ but God delivereth them from them all. ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ No matter how big the problem, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈ God has promised to deliver you out ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ of ਨੇ your ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ affliction. ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ That is not my promise. ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ That is God's promise. ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ My friend, only believe your beloved. ਓ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ He's brought you so far, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਇਆ ਹੈ and He won't leave you or fail you now. ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਕਦੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ My gracious Heavenly Father, ਮੇਰੇ ਦਿਆਲੂ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ I lift the matchless name of Jesus Christ. ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹਾਂ And apply it to these people, the ਔਰ precious ਉਸ blood. ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ Lord, the devil cannot cross the blood of Jesus. ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ Let your sheep hear now that by your stripes that they are healed. ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ I curse every demon power of sickness. ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ I command it in Jesus' name ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ that it will leave the body of these believers. ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ Father, we give you all the glory ਵਿਦਾਈ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ and we give you all the praise. ਔਰ ਸਾਰਾ ਉਸਤਤ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ Amen. ਆਮੇਨ I so thank you for reverently coming tonight to hear the word of God. ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਆਏ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ But I plead with you, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ don't let the fire go out. ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਨਾ ਦਿਓ Amen. ਆਮੇਨ It's in your responsibility ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ to live victorious.
ਜੀਵਨ ਵਿਜੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। Every answer that you will ever need ਔਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ is lying in this book. ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। If the fire is ever going out, ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਪਵੇ, turn the pages of the book ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣਾ till you hear your name being called. ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। And it's a personal revelation to you. ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। And you will become a powerhouse ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ for the Holy Ghost. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ। Amen. ਆਮੇਨ। God bless you. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। Could musicians come forward? ਔਰ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। Amen. ਆਮੇਨ। God bless. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। हालेलुया। कुछ आवाज ठंडी जी बह गई है। बोल हालेलुया। हालेलुया। प्रभु अपने सेवक को बहुत बरकत दें जिन्होंने साढ़े बच्चे दो संगतियाँ कीतियां हैं। परु भी दो संगतियाँ कीतियां हैं, एरका भी दो संगतियाँ कीतियां हैं। प्रभु अपने बच्चे को बहुत बरकत दे, उन्होंने परिवार बच्चों को बरकत दे जिन्होंने अपने प्रभु के नाम छड़ के आए हैं। खुदा उन्होंने हमेशा मदद करे। भाई रोशन उन्होंने खुदा बहुत मदद करे जिन्होंने वसीले ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਆਏ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਬਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਤ ਦੋ। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। मैंने बहुत लोगों ने ये गल कही भी इस तो पहला तुझी बंदगी जी वो नवंबर पहली 2 च रख लेंगे सी, कभी 5 च रख लेंगे सी, हुण दी गांह ही वाधे जाते। इन्नी ठंड कौन चलेगा। मैं उन्होंने कहा विआह मकर विच हुंदे आ ते लोकी मेहंदी ला के पूरे मतलब अपना तैयारियां करके मनेरे ही नहा के है ना नाल ही बच्चों नवाल के वो चले जाते। उन्होंने कख नहीं होंदा कि जे असीं मसीह का वचन सुन रहे हैं कि सानू कुछ हो जाएगा। मगर महीना आ जाए, वो महीना आ जाए, खुदा का काम नहीं रुकता। तो जे असीं कहिए भी हुण गर्मियां दे कई बार गर्मियों में भी नहीं मीटिंगां लाउंदे, कहंदे गर्मी बहुत है, मच्छर बड़ा लगता है। हाँ जी, हाँ बाबू जी ने कहते जेठ महीने में तो फिर वो मतलब कहने तो बाप फिर जे तो गर्मी आ जाए या सर्दी आ जाए तो फिर इसका मतलब हम कि विचकार का महीना लभ गई जिहदे सानू कुख ना हो। भाई मुसीबत तुहानू उठानी पैनी है वचन लैन वास्ते। तुसीं ते पिंडों उठ के आ गए, कित्थों कित्थों खुदा दे लोग इस जगह आए और वचन सुनने वास्ते भी तो वचन सुनाने वास्ते। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 8 ਵਜੇ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ वो इन्ने विश्वासी ने, इन्ने वधिया विश्वासी ने जो चर्च में आते हैं, अगर उनका मोबाइल खराब हो जाता है ना
सुनिया तुम सारे ते ओ मिस्त्री को नहीं जानते, मकैनिक को नहीं जानते, वो जेड़ा मोबाइल है वो उत्थे रख देंगे है, जो मीटर खत्म हो जाती है तो जो चुकते तो हैलो करते तो आवाज़ आती है ताड़ी मारो। जे फ्रिज खराब हो गई तो फ्रिज वास्ते दुआ करके माल चला गया उत्थे रख देता है, फ्रिज ठीक हो गई। वो तन क्यों जा खुदा चाहिए जिन्हें फ्री राज करे। हालेलुया। खुदा दे लोकां दी फ्रिजां भी खराब हो जान दवा नाल ठीक हो सकदी है। बोलो हालेलुया। कोई भी सानू मसीह मैं कहना ये फ्रिज जिहड़ी है चाहे अज हैगा फोन वगैरह ये जिहड़े खराब हुंदे आ जे ये ठीक हो सकते हैं कि तुहाडी मेरी बीमारी नहीं जा सकती। साडे विच साडी बेटी मन्नू है, उन्हें अपना जीवन परमेश्वर दिता है, हुण थोड़ा समय होया तौबा करके रुसमा पाया है। आज सेवकां नाल दी गल हो रही सी कि वो कह रही, मैं पूछा पुत्र किन्ने साल के तेरे ब्याह कहनी 24 साल पर बच्चा प्राप्त नहीं होया। की हो नहीं सकता कि साडा खुदा कुखा खोलने वाला नहीं है, वो बंद करने वाला ते वो भी खोलने वाला। सारे बोलो थोड़ा उच्ची बोलिया करो, मेरे वाली उच्ची बोलिया करो, बोला हालेलुया। वो बंद करना कोई असि विश्वास करते हैं खुदा किसी को निराशा नहीं रहने देता। अगर कोई उहदे ते विश्वास रखता है तो असि इस घर दे भी धन्नवादी हैं जिस घर ने अपना घर प्रभु के नाम च खोलिया। ताड़ी मारो। इस घर को खुदा ने वड्डी बरकत दी है। हर साल जिहड़ा टेंट है उन्हें दी गड्डी है वो गड्डी ते लैके आउंदे सेवा करते हैं कि खुदा इहदा भांगा छड्ड देगा। मतलब उन्होंने 3 दिन अगर गड्डी बंद की है और गड्डी बाहर नहीं जा रही। कल जो समान लग रहे हैं तो पहले मुंडे कहते आ भुड़के ते, मैं हाँ भुड़के ते जांदा इन्ना माल भुड़के ते जांदा। मतलब सानू खुदा ने ऐसे संद भी दिते हैं, सानू संगतां भी आओ जी दित्ती हैं जेडे साडे कई बोझ उठाउंदी हैं। हालेलुया। सेवक कोई नहीं कर सकते, एक पब्लिक ने सकती। जो असी अज सेवकां दे बारे कुछ करा ने खुदा दी लोकां नूं अपने घर च उतारा दिता है। मैं कहना उन्होंने घाटा नहीं गा क्योंकि प्रार्थना करके किन्ने सुंदर चल ने उन्होंने जो तुहाडे घर में जाके प्रार्थना कर बोलो। तुसीं कोई थोड़ा बहुत खर्च भी दिता तो भांगा नहीं लेना। जे फ्रिज ठीक हो सकती है तो तुहाडियां बीमारियां भी दूर हो सकती हैं, तुहाडे बोझ ठीक हो सकते हैं, तुहाडे गम जी दूर हो सकते हैं, तुहाडियां लामतां दूर हो सकती हैं। ऊंची बोलो हालेलुया। इस गल दा विश्वास करते हैं। भैन भरा सेवक आए, उन्होंने कलीसियां आईयां, मैं अपने सेवकों का भी धन्नवादी हूँ ते उन्हां दी कलीसियां का भी धन्नवादी हूँ। कोई निक्की जी गल नहीं है, आप आना कलीसियां नूं लैके आना। हालेलुया। भैनों भराओ रब दे वास्ते तुहाडे अंदर या मेरे अंदर एक अग लगी रहनी चाहिए। बोलो ते कईयां दे तक 5 दिन पहुंच जाती है, वो कहते मैनू तौबा समझली नहीं है, वो कहते मैंने तौबा बरतर की नहीं आई, कहते ले लो अपनी तौबा। भैनों भराओ ऐदा ना करो, तुहाडे जीवन में तुहाडे हिरदे में विचकार अग लगी है बचन दी। वो होर ना धूएं वाली ना सोच लो। हालेलुया। साडे संगति विच एक परिवार है जिन्हों ने अज हुण शाम की रोटी पकाई है। उन्होंने दस्सिया कि साडा कुछ कर्जा सी परमेश्वर ने उतार दिता। किन्ने? शमीरे ने। हालेलुया। परमेश्वर ने उतारिया। इसे खुशी विच असीं कलीसिया की रोटी पकाई। साडी ताड़ी मारो। एक परिवार जिहड़ा है, एक परिवार 16 साल तो लगातार रोटी पका रहा। पहली फैसला बना लिया उन्हें, वो टस को मस नहीं करते, भावें गरीबी में भावें जिदा भी मर्जी वो करते हैं रब दे नाल। जदों तुसीं हालेलुया फैसला बनाउंदे हो, खुदा भी फैसला बनाउंदा। जदों असीं फैसला ढाउंदे हैं परमेश्वर भी ढा लैंदा। बोलो मंगो तो तुहानू, ढूंढो तो तुहानू, लटकाओ तो तुहाडे आसे। बंदे का नहीं, मैं बार बार बोलता, संस्थावां का नहीं,
बोलो प्रभु का दरवाजा संस्थावां दा नहीं, ग्रुपां दा नहीं, एक परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। तो मैं ज्यादा समय ना लवां। जिन्ना जिन्ना भी भैन भरावां ने आपको अपने घरां खुदा दे दफ्तर नूं बुलाया है, खुदा दा बहुत बरकत है। और सारे भैन भरावां दा मैं धन्नवादी हाँ जो जो योगदान पाए सेवावां कीतियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਭਾਈ ਰੂਪ ਸੋਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੂੰ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਬਸ਼ੀਰ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਸੋ ਭਜਨ ਹੋਏਗਾ। Hallelujah. आया मसीहा
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो कोई आवे है ना ते बरकत पावे ते झोलियां भर के वापस जावे। किहदे घर? मतलब किसी मंत्री के घर, मंत्रियों के मंत्री के घर। बोलो हालेलुया। हन्ना प्रभु के घर जाए ते झोली भर के गई। कोई भी जिहड़ा इंसान प्रभु के घर चाहुंदा है उन्होंने आशीष प्राप्त होती है। वो कदी खाली नहीं जा सकता। आस रखने वाला कदी शर्मिंदा नहीं होता। हन्ना ने आस रखी और आस पूरी हुई। वो प्रभु के घर में आन कर प्रभु तो एक वरदान बच्चा लिया, फिर उन्हें ले लिया, फिर उन्हें अपने घर नहीं रखा, उन्हें प्रभु के कामों से देता। कोई दिंदा भला? मुश्किल है। पर हन्ना दे कोल पहला भी थोड़ी सी एक ही बच्चा होने के कारण उन्हें फिर प्रभु को देता। उस तो बाद भला प्रभु ने कोई भुख रहने दी? वाह वाह। प्रभु के कोल कोई कमी नहीं। साडे घरां च कमी है पर प्रभु के घर च कोई कमी नहीं है। चर्च टाइम ना लाओ, अपने सेवकों के नाल मिल के चलो। जेड़े जेड़े तुसीं अपने सेवादारां नाल काम करदे जरूर करो। हालेलुया। बगैर पक्षपात रब का काम करो। वो करोगे तो फिर वड्डियां बरकतां। ये गल नहीं है कि कोई सही जाए, है ना? सही कोई लफ्ज़ नहीं है तो ईसाई है, पर बहुते ईसाई कहते। ये नहीं कोई ईसाई जाए उन्होंने ही बरकत मिले, मसीह जाए उन्हें मिले तो दूजे नूं नहीं मिले। जेड़ा भी है किसी कौम धर्म का उत्ते विश्वास रखे, उसकी प्रभु मदद करेगा। और अज कल जुगो जुग एको जिहा परमेश्वर है। असीं उहदा धन्नवाद करते हैं। बहुत जोर के नाल पंडाल भर गया। मैं सोचता कि खाली रह जाना है, पर प्रभु की वड्डी दया हुई है। सारिया संगतां दा, आए भैन भरावां दा मैं धन्नवादी हाँ। असीं अपने पास्टर जी नाल मिल के प्रार्थना करनी है। लाइट वाले वास्ते, साउंड वाले वास्ते, जिहड़ा पंडाल है, हलवाइयां वास्ते, सारे वास्ते, सारे दरस्तियां वास्ते, दाना वास्ते और संजोग देने वाले वास्ते, ते वो भैन मनु वास्ते, होर भी कोई बार विश्वास के नाल प्रार्थना करवाए तो खुदा ने चंगा कर दे। हाँ, आराधना एक लड़की है वो वास्ते। और भी कुछ मैंने भैन भरावां ने बोलिया है। कर दो हाथ खड़ा। एक किंदू बनाया फिर तुहाडा नाम तो पुछण की लोड़ नहीं है। हालेलुया हालेलुया। तुसीं विश्वास करो, तुहाडे अंदर विश्वास की अग होवे, खुदा तुहाडी मदद करेगा। अपने सेवक नाल प्रार्थना सारियां ए तो लैके जग तक सब अपनी अखां बंद करांगे, अपने सिरां नूं प्रभु के हजूर विच झुकावांगे, प्रार्थना करांगे। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि वो अपना वचन काल के चंगा करता है। परमेश्वर ने चंगा करने वास्ते अपना वचन काल देता है। और ये वचन है वो बे औलाद तीवी का घर वसाउंदा है। आमीन। उन्होंने बच्चियां की मां बना के आनंद करता है। परमेश्वर ने अपनी प्रजा नाल वादा किया, ना तुहाडे विचों कोई नर ना तुहाडे विचों कोई नारी बेफल रहेगी। ये प्रभु का वचन है तो प्रभु अपने वचन को पूरा करता है। आओ असीं सब तो पहला इस बच्ची मन वास्ते अपने हाथ उठा के बेनती करांगे। सारी संगत दुआ करांगे प्रभु उस बच्ची ते कृपा करे, प्रभु की आस नूं दी मुराद नूं पूरा करे। उस बच्ची आराधना वास्ते असीं बेनती करांगे। सब अपने हाथ उठा के दुआ करांगे। साडे प्रेमी परमेश्वर तू अपने वचनों को पूरा करने याद रहिंदा है। जमीन के आसमान टल सकते पर तेरे पूरे वचन नहीं टल सकते। तू जो कहता है उसको पूरा भी करता है। तेरे नाम की बजाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की इज्जत शोभा करते हैं। बेनती करते हैं पिता परमेश्वर भैन मनु वास्ते, पिता उसते रहमत कर। हालेलुया। प्रभु की आस को पूरा कर दे पिता परमेश्वर। अपना वाक वो जीवन पूरा कर दे जो तो क्या है
तू बे औलाद तीना घर वसाउंदा है, ये बच्चा ने मां बना के अनाथ करता है। अपना ये वचन उस जीवन च पूरा कर दे। आमीन। जो शैतानियां शक्तियां जीवन च काम करदियां ने और उन्हें उस बच्ची ने बरकत ढकिया है, तेरी जीवन के सिरक होंदे होई शैतानियां सारियां शक्तियां यीशु मसीह नाल जगदे आज तो जीवन च दूर हो जाए। प्रभु तेरा वादा तेरा वचन जीवन पूरा हो जाए तो तेरी बच्ची अपनी बरकतां प्राप्त कर सके। पिता जी तेरे वचन नाल खड़े होंदे आ, तो क्या है एक दूसरे की प्रार्थना करो ताकि तुम निरोई कीते जाओ। प्रभु इस तेरे वचन की वरतों करते हैं, एक दूसरे की प्रार्थना करते हैं, इस बच्चे मनु लिए प्रार्थना करते हैं, इस बच्ची की रात लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर तो अपनी बच्चियां ते कृपा करना मुरादों को पूरा कर दे। पिता परमेश्वर प्रभु एक सच्ची जिंदगी गवाही पैदा कर दे। तू कल आज जुग जो एक हो जाए। पिता परमेश्वर असं हमारे गलों के गवाह हाँ प्रभु, तू बहुत बार साड़ियाँ बेनतियां प्रार्थना सुनिया, तू उत्तर दिंदा है। तेरा धन्यवाद करना पिता परमेश्वर। जिन्नियां तेरियां बच्चियां बच्चों ने प्रभु जी शिफा के वास्ते चंगियाई के वास्ते अपने हाथों को उठाया है। पिता परमेश्वर उन्होंने सारे हाथों को तू वेख लिया है। पिता परमेश्वर उन्होंने वास्ते बेनती कर दिया प्रभु, अपने किला वाले हाथ में नीवा कर दे, अपने शेद हाथ में बढ़ा दे, उन्होंने भैन भरावां शु के चंगा कर दे। लड़ियां आत्माओं शक्तियां सारियां बीमारियां तेरे नाम यीशु मसीह तेरे बच्चे जीवन चो दूर हो जान, तेरियां बच्चियां बच्चे काम चंगाई पान। तेरा धन्यवाद स्वर्गीय परमेश्वर। असं बेनती करते हैं प्रभु जी खुदावंद जिन्नियां तेरियां बच्चियां बच्चों ने इस इन्हां बंदियां विच योगदान पाया है, तैल सेवा की है, उन्होंने बहुत बड़ी बरकत दे। पिता परमेश्वर हालेलुया। जो जिन्होंने तन मन धन नाल तेरी सेवा की है, अपने घरां नूं तेरे नाम वास्ते खोलिया, तेरे सेवकां दा अपने घरां च बुला के बहुत आदर भाव किया है। पिता परमेश्वर उन्होंने बहुत बड़ी बरकत दे खुदावंदा, जिस मकसद वास्ते पिता परमेश्वर उन्होंने तेरे सेवक अपने घर च बुलाया है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर उन्होंने सारे मकसदां नूं अपने शरत दे अंदर पूरा कर दे। ते पिता अपने पुत्र यीशु के नाम नूं महिमा दे ताकि तेरे पुत्र यीशु का नाम उच्चा होवे। तेरा धन्यवाद करना पिता परमेश्वर। जो भी तेरियां बच्चियां बच्चा ने तेरी जीवन की सेवा के दान दिते हैं पिता परमेश्वर, ये सारे दान तेरी जीवन से प्रवान किए जान। तेरा वचन वादा है दोग दिता जाएगा जब तेरियां बच्चियां बच्चे ने तेरे नाम दस दिता है, मतलब इसके बदले उन्होंने बहुत बड़ा प्रतिफल वास करना खुदावंदा। खाण पीण दी सारियां वस्तुओं नूं अपने पुत्र के शेदत नाल छू के बरकत दे खुदावंदा। जिन्हां तेरे बच्चों के योगदान नाल प्रभु ये सब भोजन पदार्थ तैयार किए गए हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बरकत दे खुदावंदा। जिन्हां हत्थां नाल भोजन तैयार किया गया बड़ी बरकत दे खुदावंदा। जिन्हां प्रभु वो भोजन वर्तान च सेवा करनी है वो प्रभु ने बहुत बड़ी बरकत दे खुदावंदा। आए हुए सारे सेवकां नूं बरकत दे, इत्थों दे सेवक भाई नूं बहुत बड़ी बरकत दे, इत्थों दे संत के भाई भैन बहुत बरकत दे। जिन्हें लोगों तेरा वचन सुनिया खुदावंदा पिता परमेश्वर कृपा कर दे। पिरामिड की मान दे प्रभु वो मजबूत हो जाए, जरा भी नेचा तो डावाडोल ना हो, जरा भी नेचा तो ना हिलन प्रभु। और तेरे पवित्र आत्मा की आग उन्हें जीवन सदा बलदी रहे खुदावंदा। हालेलुया। तेरा धन्यवाद प्रभु। अपने लोगों को उठाए जाने लायक ना सिर ते संपूर्ण बना, ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। सो बहुत अच्छा है। सो बदगी समाप्त करने तो पहले उसमें घर वाले ने जिस घर संगति हुई है कुछ सेवकां उन्होंने कंबल